Charak Samhita is related to which of the following subject to medicines है. As explained earlier, Charak Samhita is a key text in Ayurveda dealing with diagnosis, treatment, lifestyle, and ethics of medicine. Emphasizes prevention and wellness and introduces ideas like balances of dose and panchkarma therapy, concept of Agni digestive fire. Agni digestive fire. Arthashastra, statecraft and economics. Politics not a medical subject. Religion, though Ayurveda includes spiritual elements, it's primarily a scientific system. फाइनल समरी ऑफ अच्छा नो ऑथर्स एंड वर्क्स बाय नेम. अच्छा ये तो हो गया. मिलिंद पन्हो ग्रीको बुद्धिस्ट फिलोसफी. पंच सिद्धांत ग्रीक इंडियन एस्ट्रोनॉमी फ्यूजन. पंच सिद्धांत. चरक फर्स्ट टू सेकंड सी. वराह मिहिर सिक्स्थ सी. कल्हाना 12th सी. The religious texts which explain about the 8 different phases of agriculture works is Milind Panho. Milind Panho Questions of Milind is a Buddhist Pali text written in the form of dialogue of Indo-Greek king Maninder ya Milind and monk Nagsena. It explores metaphysics, karma, rebirth and surprisingly also refers 8 phases of agriculture activity. ये 8 फेज एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में भी बताता है. शोइंग बुद्धिस्ट कंसर्न विद प्रैक्टिकल लाइफ. अवधनस्तक ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्शन ऑफ मोरल स्टोरीज कॉल्ड अवादनस बट इट डज नॉट फोकस ऑन एग्रीकल्चर. आर्य मंजूश्री मूलकल्प ए बुद्धिस्ट तंत्र टेक्स्ट. आर्य मंजूश्री मुकल्प. दीपवंश ए पाली क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंकन बुद्धिस्ट मेनली ट्रेडिशनल. दीपवंश में अशोक जी का नाम है शायद दीपवंश में. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर जैन टेक्स्ट. नीतिपकरण, परिशीनीति पर्वन और त्रिहस्तिक लक्षण महापुराण. अवध देखिए परिशिष्ट पर्वन authored by Hemchandra, a Jain scholar of 12th century. It is historically chronicle about Jain teachers. हाँ तो करो ना. त्रिहस्ति लक्षण महापुराण by Champat Rai या चामुंड राय, a 10th century Jain work narrating lives of 63 Jain figures तीर्थंकर, चक्रवर्तींस, बालभद्र etc. नीति पकरण ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट. नीति पकरण ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट. पार्ट ऑफ पाली कैनियन about doctrinal interpretation. Avad Nastak collection of Buddhist Avadans, inspirational tales, part of Mahayana tradition. Match the following court poets with their kings. Amir Khusru Alauddin Khilji. कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड सही है. हरिसेन समुद्रगुप्त हाँ इलाहाबाद प्रशस्ति लिखे थे. बाणभट्ट हर्षवर्धन हर्षचरित्र लिखे थे. सही है. आमिर खुसरो 13th-14th century Sufi poet, musician, courtier of Alauddin Khilji and other Delhi sultans. Wrote in Persian and Hindi. Kalidas, classical Sanskrit poet and dramatist in the court of Chandragupta II Vikramaditya Gupta Empire. Works Abhigyan Sakuntalam, Raghuvansh, Kumar Sambhava. Harisen, court poet of Samudragupta, wrote the Allahabad pillar inscription Prasasti, glorifying the king's conquest. Banabhat, 7th century Sanskrit scholar, court poet of Harshvardhan, author of Harshcharit and Kadambari.
ऑथर ऑफ हर्षचरित्र, बाणभट्ट, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, ऑथर ऑफ हर्षचरित एंड कादम्बरी. The contemporary ruler of Kalhana, the author of Raj Tarangini was Jai Singh. Kalhan, 12th century Kashmiri historian. His Raj Tarangini, River of Kings, is considered first true historical chronicle in Indian literature. Jai Singh in 1128 to 1149, king of Kashmir during Kalhan time. Kalhan completed Raj Tarangini during his reign. Harsh Govind Chandra Jayachandra, the rulers of different regions. जब कल्हान राज तरंगिनी लिख रहे थे तो उस समय राजा कौन थे? जय सिंह थे. How many tarangs are in Raj Tarangini? 8 books. Raj Tarangini has 8 book tarangs, comprises 7,826 verses in Sanskrit. The first 3 tarangs over mythological and legendary history of Kashmir. Remaining ideals are political history of the 12th century, showing Kalhan attempt of mythological historiography using multiple sources, जैसे inscription, earlier text and oral tradition. 9, 10, 11 tarangs are incorrect for Kalhan version. Later writers John Raj, Srivar, Rajay Bhatt and Suk added continuation to Kalhan work. लेकिन 8 ही जो है तरंग हैं राज तरंगिनी में. मिलिंद पन्हो इज क्रूशियल फॉर लिंकिंग बुद्धिस्ट फिलोसफी विद ग्रीको-इंडियन. सही है. Interaction, it shows cultural pluralism of post-modern period Jain literature, often focused on biographies of Tirthankar and ethical codes, while Buddhist literature was more doctrinal and philosophical. Raj Tarangini is India's earliest historical text with an analytical chronology. Very important. अच्छा, court poets were not only artists but also political propagandists like Hari Sen and Banbhatt. Banbhatt उनके में थे. ये हरि सेन गुप्त पीरियड में थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के पीरियड में थे. Who among the following continues Raj Tarangini of Kalhana? तो जोन राज और श्रीवर, इन्होंने राज तरंगिनी कंटिन्यू किया. राज तरंगिनी was originally written by Kalhan in 12th century, chronicling the history of Kashmir in 8 tarang. John Raj, his successor, continued it under Rajavali Patak, covering of Sultan Jainul Abdin's reign. राजावली पटक, जोना राज ने राजावली पटक लिखा. After Jona Raj's death, his pupil Srivar extended it further. जोना राज और श्रीवर ने कंटिन्यू किया. बिल्हाना ने क्या लिखा? विक्रमन का देव चरित्र. मेरुतुंग, a Jain scholar who wrote प्रबंध चिंतामणि. मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि. मोहम्मद काव्य प्रकाश, मोहम्मद ने लिखा काव्य प्रकाश एंड पोएटिक्स. Saundranand was the composition of Ashwaghosh. Saundranand was composition of Ashwaghosh. Ashwaghosh, 1st to 2nd century, he was a renowned Buddhist poet and philosopher. Saundranand is a kavya, poetic work combining Sanskrit literary elegance with Buddhist philosophy. Ashwaghosh, Saundranand. It narrates the transformation of Nand, Buddha half-brother, for sensual indulgence to renunciation. Saundranand, Ashwaghosh. ये बुद्ध के मतलब हाफ ब्रदर मतलब चचेरे भाई के बारे में. बाणभट्ट ऑथर्ड हर्षचरित एंड कादम्बरी. भवभूत
8th century dramatist work on उत्तम चरित्र भास स्वप्न वासवदत्तम नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका वेर रिटन बाय हर्षवर्धन नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका रिटन बाय हर्षवर्धन 7th century C ruler of Thaneswar and Kannauj what was a literary king Ratnavali romantic drama Priyadarshika a tale of love and separation Naganand unique as its blend Buddhist and Hindu themes with Jimutvahan as Bodhisattva hero Priyadarshika a tale of love and separation Naganand unique as its blend Buddhist and Hindu themes with Jimutvahan as Bodhisattva hero. Banbhat, court poet of hers, Vishakha Dutt wrote Mudra Rakshas. Vatsyayam authored Kamsutra. Which of the following works were authored by Hers? Naganand, Hers, नहीं हर्ष चरित्र तो बाणभट्ट ने नहीं प्रियदर्शिका हर्ष ने बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित और रत्नावली हर्षचरित ऑथर्ड 3 plays हर्षचरित was not authored by Hers it was written by बाणभट्ट बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र प्रियदर्शिका नागनंद और रत्नावली which among the following plays was written by हर्षवर्धन प्रियदर्शिका रत्नावली और नागनंद Priyadarshika is one of the 3 plays authored by Hers. It combines court life, love and human emotions. Hers Charitra Banbhatt biography of Hers. Kadambari a romantic prose novel by Banbhatt. Devi Chandraguptam authored by Vishakha Dutt. Vishakha Dutt ने Devi Chandraguptam लिखा. Among the 4 works mentioned below, which one is encyclopedic in nature? Brihat Samhita. Brihat Samhita by Varah Mihir is an encyclopedic Sanskrit text cover astronomy, astrology, architecture, gemology, weather, agriculture, omens and more. Brihat Samhita part of Gupta intellectual resurgence. वराह मिहिर ने लिखा था अमर सिंह ने सिद्धांत शिरोमणि मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज बाय भास्कराचार्य अष्टांगगृध्यम आयुर्वेद टेक्स्ट बाय वाघभट्ट ने लिखा था भवभूति हस्तिमाला और क्षेमेश्वर वेर फेमस प्ले राइट्स भवभूत हस्तिमल क्षेमेश्वर वेयर फेमस प्ले राइट्स ठीक भवभूत 8th century संस्कृत ड्रामाटिस्ट कोर्ट पोएट यशो वर्मन ऑफ कन्नौज वर्क्स मलाति माधव उत्तम चरित्र महावीर चरित्र भवभूति ने ये सब क्या है मतलब प्ले राइट्स हैं संस्कृत ड्रामेटिक कोर्ट पोएम ऑफ यशो वर्मन ऑफ कन्नौज भवभूत यशो वर्मन के दरबार में थे इन्होंने मालती माधव उत्तर रामचरित्र महावीर चरित्र लिखा था भवभूति ने हस्तिमल्ला कन्नड़ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ होयसाला एरा लाइक 11th century केसिस मरवा क्षेमेश्वर कश्मीरी संस्कृत पोएट 11th century ऑथर्ड 10 अवतार चरित्र बेस्ड ऑन विष्णु 10 इनकारनेशन ठीक जैन monk हेमचंद्र हरि भद्र आर नॉन जैन ऑथर्स टेम्पल आर्किटेक्ट अनरिलेटेड फिलोसफर नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच मृच्छकटिकम शूद्रक सही है बुद्ध चरित्र वासुबंधु सही है मुद्रा राज अरे नहीं ये बुद्ध चरित्र वासुबंधु नहीं ये अश्वघोष ने लिखा है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है हर्षचरित बाणभट्ट सही है मृच्छकटिकम शूद्रक सोशल ड्रामा है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त पॉलिटिकल ड्रामा है हर्षचरित बाणभट्ट हर्ष की बायोग्राफी है ठीक है बुद्ध चरित्र एक्चुअली अश्वघोष नॉट वासुबंधु
अब देखते हैं स्कॉलर्स एंड देयर एसोसिएशन। पनिनी इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंग। पनिनी पुष्यमित्र शुंग से, पुष्यमित्र शुंग तो बहुत पहले हुए, पनिनी बाद में हुए नहीं। हाँ, अमर सिंह इज गुप्ता एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन नहीं, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में थे। कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त सेकंड सही है, तो ये दोनों गलत है। तो पन्नी 5th to 6th century BC predates the Sung. He wrote Astadhyay, a grammatical treatise. Patanjali, not Panini, was associated with Pushyamitra Sung. पतंजलि इनसे एसोसिएटेड थे। अमर सिंह was a lexicographer, one of the Navratna of Chandragupta II. Kalidas was most prominent of 9 gems Navratna at the court of Chandragupta II Vikramaditya. सही है। अब देखते हैं मेमोराइज क्लासिकल ऑथर बाय कोर्ट एसोसिएशन एंड जनरे, जैसे कालिदास गुप्ता डायनेस्टी में थे। हर्ष प्ले राइटर थे। बाणभट्ट हर्ष के बायोग्राफर थे। हर्ष चरित्र लिखा इन्होंने। वराह मिहिर एस्ट्रोनॉमी। अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर। 3 रागाज बाय हर्ष कौन कौन सा है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। डिस्टिंग्विश वर्क बाय थीम एंड फॉर्मेट। पोएटिक एपिक्स वर्सेस ड्रामा। बुद्धिस्ट वर्सेस जैन वर्सेस हिंदू थीम्स। मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क। अब देखिए, वराह मिहिर बृहत संहिता, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, बिल्हाना, विक्रमन का देवी चरित्र। वराह मिहिर a prominent astronomer and mathematician of Gupta period. His Brihad Samhita is an encyclopedic work covering a range of subjects such as astrology, astronomy, architecture and meteorology. वराह मिहिर। विशाख दत्त a court poet of the Gupta period. विशाख दत्त authored मुद्रा राक्षस। Devi Chandraguptam is his work dramatizing the victory of Chandragupta Maurya and his establishment of the Mauryan dynasty with the help of Chanakya. Sudrak, dramatist and author of Mrichkatikam. Sudrak, which is a famous Sanskrit play known as the Little Clayard. Mrichkatikam. It depicts a life of young merchants, love story and social intricacies in ancient India. Bilhan in his Vikraman ka Devi Charitra, a poetic account of the king Vikramaditya VI of the Chalukya dynasty. Bilhan ने लिखा। With reference to the ancient Indian history, consider the following pairs. अब पेयर्स कौन कौन से हैं? देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त सही है। एज विशाख दत्त ऑथर देवी चंद्रगुप्तम, द ड्रामा फोकसिंग ऑन चंद्रगुप्त राइज टू पावर। हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी सही है। ए मेजर जैन वर्क। हमीर महाकाव्य इज ए नैरेटिव पोएम डिटेलिंग द लाइफ ऑफ किंग हमीर। मिलिंद पन्हा नागसेन। This work is famous Buddhist dialogue between King Manendra and monk Nagasen, dealing with concept of Buddhism and ethics. नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी. This work attributes same Somadev Suri is a part of Jain literature focusing on moral and ethical guidelines. Which among the following sources threw light on the history of Parmar dynasty? All of the above. Naswang Chariot of Padmagupta, a crucial source of the history of Parmar dynasty. In this text sheds light on dynasty's rise along with legacy of King Bhoj, Parmar dynasty, King Bhoj. Prabandh Chintamani of Merutung, a Jain chronicle, offer a glimpse into the period of the Parmar and their contemporaries. Udaipur Prasast inscription of the Mewar region provide evidence of the Parmar dynasty significance and territorial governance.
All these sources contribute significantly to reconstructing the history of the Parva dynasty in medieval India. ठीक है. Which of the following pair is not correctly matched? तो कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखा था. कर्पूर मंजरी मतलब हर्ष ने 3 लिखा था, रत्नावली, नागानंद और एक और लिखा था. हर्ष ने लिखा था कहाँ गए हर्ष भाई साहब आप? प्रियदर्शी का नागानंद और रत्नावली. तो कर्पूर मंजरी किंग महेंद्रपाल of the Pratihara. It is attributed to Rajsekhar, a poet and playwright at the court of King Mahendrapal of Pratihara dynasty. राजशेखर ने लिखा था कर्पूर मंजरी. मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने, one of the Kalidas famous plays about the romance of King Agnimitra of the Sunga dynasty and Malvika. Mudra Rakshas Vishakhadatta is a historical drama depicting Chandragupta Maurya rise with the help of Chanakya, centered around his victory over Dhananand. Saundranand Ashwaghosh wrote Saundranand, which tells about the story of Nanda, Buddha's half-brother, who renounces worldly pleasure of the Buddhist path. Who wrote Sakuntalam? Kalidas ने लिखा है. Sakuntalam is a famous Sanskrit play written by Kalidas, one of the most celebrated classical poets of ancient India. It is a tragic love story of Sakuntala, the daughter of the sage King Dushyant, set in backdrop of Himalayan forest. Sakuntalam कालिदास ने लिखा है संस्कृत में. Which of the following is not a literary masterpiece of कालिदास? तो मृच्छकटिकम ये कालिदास ने नहीं लिखा है, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम. फोकसिंग ऑन द सोशल एंड रोमांटिक थीम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. मेघदूत कालिदास ने लिखा है. विक्रमोर्वशीयम another Kalidas play where Urvasi and Vikramaditya love story takes center stage, representing one of the Kalidas masterpiece in dramatic tradition. Vikramoorvashiyam. Who wrote मृच्छकटिकम? शूद्रक ने लिखा है. मृच्छकटिकम is a Shudrak's famous play and prose drama of ancient India. The play narrates a love story set in backdrop of merchant class, dealing with romantic entanglements, social conflict and cosmopolitan life of ancient India. The protagonist of the play Malvika Agnimitram, written by Kalidas, is Agnimitra. Malvika Agnimitram is the first Sanskrit play of Kalidas, centered in the romantic tale of King Agnimitra, son of Pushyamitra Sung and Malvika, a court dancer. It's 5-act play that blends royal court life with poetic romance. Pushyamitra Sung, founder of the Sung dynasty, father of Agnimitra. Gautami Putra Satkarni, Satvahan king, unrelated to this drama. Chandragupta II, patron of Kalidas. Which of the following books of the ancient India has the love story of the son of the founder of Sung dynasty, Malvika Agniputram? किसने लिखा है? मालविका अग्निपुत्रम कालिदास ने जी ने लिखा है. इज अबाउट अग्निपुत्र सन ऑफ पुष्यमित्र सुंग. देखिए ये जो था कालिदास जी जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के उसमें थे, कोर्ट में थे, लेकिन इन्होंने मालविकी अग्निपुत्रम मित्रम, ये अग्निमित्र के बारे में लिखे हैं. अग्निमित्र किसके पुत्र थे? पुष्यमित्र शुंग के. ठीक. एंड हिज लव फॉर मालविका. स्वप्न वासवदत्त, ये भास ने लिखा है. सेंटर ऑफ द किंग उदयन. मेघदूत कालिदास लिरिक पोयम अबाउट यक्ष.
Ratnavali drama by Harsh unrelated to Sung. The author of Swapna Vaswadatta is Bhas. Bhas, an early Sanskrit dramatist pre-Kalidas, wrote 13 plays, rediscovered in 20th century. Swapna Vaswadatta is a court drama involving King Udayan and his queen Vaswadatta. कालिदास later dramatist भवभूति उत्तर रामचरित्र. राजशेखर authored कर्पूर मंजरी. राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा. हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? जयदेव. जयदेव जो है वो गीत गोविंद के लेखक हैं. जयदेव. हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? जयदेव. जयदेव जो है वो गीत गोविंद के ऑथर हैं. गीत गोविंद इज ए संस्कृत लिरिकल पोएम composed by Jayadev in the 12th century. It describes the divine love of Radha and Krishna, rich of bhakti and erotic mysteries. Jayadev was the court poet of Lakshman Sen, Bengal. गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है. सूरदास डिवोशनल हिंदी पोएट, रॉट सूरसागर. केशव गीत गोविंद. मीरा भक्ति संत पोएट ऑफ कृष्णा, रॉट इन राजस्थानी ब्रज. Whose court was embellished by Jayadev, composer of Geet Govind? Lakshman Sen. Lakshman Sen, 12th century, king of Bengal. Sen dynasty patronized many poets including Jayadev. Court also had Dharmadas and Govardhan. जयदेव कंपोजर लक्ष्मण सेन के मतलब कोर्ट में थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखी 12th सेंचुरी में. किंग ऑफ बंगाल, सेना डायनेस्टी, लक्ष्मण सेन. पैट्रोनाइज मेनी पोएट्स इंक्लूडिंग जयदेव. कोर्ट आल्सो हैड धर्मदास एंड गोवर्धन. जयदेव लक्ष्मण सेन के. हु हैड कंपोज्ड गीत गोविंद? जयदेव ने. गीत गोविंद इज a masterpiece of Sanskrit lyrical poetry and high influential in Vaishnavism. Though an early poet in the same court, Govardhanacharya, another poet of Lakshman Sen court. लक्ष्मण सेन पैट्रन थे. अब देखेंगे हम लोग अष्टांग समग्र मेडिकल साइंस आयुर्वेद एट्रीब्यूटेड टू वाग्भट. अष्टांग समग्र वाग्भट. 10 रूपक संस्कृत ट्रीटीज एंड ड्रामा बाय धनंजय. लीलावती भास्कराचार्य सेकेंड, डीलिंग विथ अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. महाभाष्य ग्रामेटिकल ट्रीटीज बाय पतंजलि. कमेंट्री एंड पननी अष्टाध्यायी. भाई पतंजलि. Thy right is to work only but never with its fruit. हमारा काम है काम, फल की चिंता न करना. Is stated in which of the following book? Gita. This famous slok comes from Bhagavad Gita, chapter 2, verse 47. कर्मान्वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. It emphasizes निष्काम कर्म, duty without attachment to results. अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर. महाभाष्य पतंजलि ग्रामर कमेंट्री. महाभारत गीता is part of it but the direct source is Gita. Name the source that is silent about the trade routes of ancient India. Sangam Sahitya. Name the source that is silent about the trade route of ancient India. Sangam Sahitya. Sangam literature Tamil is rich in social, political and emotional content but does not explicitly discuss trade routes, although it hints at commerce and port life. Milind Panha mention exchange of ideas and indirect references to movement. Jatak tales, Buddhist stories that often describe trade routes, merchant ships, etc. What is here is also found elsewhere, but if not here is found nowhere else. जो यहाँ है वो हर जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है. ये कहाँ था? Is from Mahabharata, claiming that it encompasses all knowledge found in other texts. Yad iha asti tad anyatra, yan neha asti na tat kavachit. वाह.
It emphasizes the encyclopedic nature of Mahabharata, which includes mythology, dharma, statecraft, philosophy, wars, sciences, etc. Ramayana focuses on dharma, virtue through Ram life, Gita, part of Mahabharata. Raj तरंगिनी फोकसेस हिस्ट्री ऑफ, ये किसने, कल्हाना ने लिखा था। अब देखिए कौन कब आए कब नहीं आए। तो सबसे पहले भास, कालिदास, भवभूति, जयदेव इनके लक्ष्मण सेन के कोर्ट में थे। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, जयदेव लक्ष्मण सेन, बाणभट्ट हर्ष, भवभूति यशोवर्मन। Which ancient Indian book has been translated into 15 Indian and 40 foreign languages? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा जी ने। is one of the most widely translated ancient Indian text. It's collection of animal fables designed to teach political wisdom and human conduct. Written originally in Sanskrit, 3rd century CE, it has been translated into over 50 languages, including Persian, Ayyar-e-Danis by Abul Fazl during Akbar's reign. Hitopdesh, similar to Panchatantra but compiled later by Narayan. Katha Sarit Sagar, large collection of legends and folk tales by Somadev. Sakuntala, a drama by Kalidas, translated into many languages but not as extensively as Panchatantra. Panchatantra was originally written by Vishnu Sharma, was a sage and teacher who wrote Panchatantra to educate the son of king, Niti Shastra, policy and ethics. That allegorical story, it composed in 5 parts, hence the name Panchatantra. तुलसीदास ऑथर रामचरितमानस, रायदास भक्ति संत पंचतंत्र। सर्ववर्मा कतंतारा संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट। सर्ववर्मा शूद्रक, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर, मिताक्षर, कल्हाना, राजतरंगिणी। सर्ववर्मा ऑथर्ड Katantara, a grammar manual. Sudrak wrote Mrichkatikam, a social drama. Vigyaneshwar, 12th century jurist author. Mitakshar, a legal commentary on Yagnakalva Smriti. Kalhan composed Raj Tarangini, a historical chronicle of Kashmir. Consider statement about Mitakshar and Daya Bhag legal system. अब देखिए, these system are not based on caste but on regional practice. अब जैसे मिताक्षर, sons have right to property during father's lifetime, और दया भाग they inherit only after his death. मतलब मिताक्षर मतलब क्या कि पिताजी का जो मतलब संपत्ति है वो मतलब उनके जीवित ही मिल जाएगी। लेकिन दया भाग में क्या है, उनकी संपत्ति तब मिलेगी जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इट इज़ दया भाग सिस्टम दैट अलाउज वोमेन टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। मतलब दया भाग में स्त्रियों का भी हक होता है, जबकि मिताक्षर में सिर्फ पुरुषों का हक होता है। मिताक्षर प्रीडोमिनेंट इन नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। Daya Bhag followed mostly in Bengal. Who is especially known for his contribution to the field algebra? Bhaskaracharya II wrote Leelavati, Bijganit, Siddhant Shiromani. Bijganit algebra contains systematic method to solve equation, quadratic root, etc. ठीक, आर्यभट्ट known for astronomy and trigonometry. Brahmagupta made algebraic contribution, introduced zero, but Bhaskar work was more advanced. Lal, 8th century astronomer, lesser known for algebra. algebra के लिए कौन है? भास्कर II।
Author of Leelavati Bhaskar too was a mathematician. Leelavati is a mathematical treatise named after his daughter, covered topics like arithmetic, algebra, geometry, and measurement. Leelavati treatise on mathematics was written by Bhaskaracharya, reaffirming earlier. Author of Leelavati रामानुज फिलोसफर थे. विशिष्ट अद्वैत इन्होंने वो किया. कौटिल्य अर्थशास्त्र. अमर्त्य सेन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. पंचतंत्र ग्लोबल रीच एमंग एंशियंट एंड ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्सपोर्ट्स. लीगल सिस्टम मिताक्षर एंड दयाभाग. मिताक्षर जो है पिताजी के जीवित रहते हुए और सिर्फ पुत्रों के लिए होता है. दयाभाग पिताजी की मृत्यु के बाद और ये स्त्रियों को भी मिल सकता है. फ्रिक्वेंटली टेस्टेड इन पॉल. अच्छा, आर्यभट्ट पाई और अर्थ रोटेशन दिए. ब्रह्मगुप्त जीरो. भास्कर. अब देखिए आर्यभट्ट पाई और अर्थ रोटेशन की अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है. ब्रह्मगुप्त जीरो. भास्कर सेकंड अलजेब्रा बीज गणित. और लीलावती अलजेब्रा बीज गणित और लीलावती. वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमी. राज तरंगिनी बाई कल्हान. ऑलवेज रिमेंबर हिस्टोरिकल of Kashmir king. Aryabhatta was Indian mathematician and astronomer. Aryabhatta, born in 476 CE, was a legendary Indian scholar of the Gupta era. His major work was Aryabhatta. Astronomy, concept of Earth rotation on its axis, eclipse theory, heliocentrism. Mathematics, trigonometry, arithmetic, and algebra. He introduced sine, function, and approximately pi as 3.1416. Okay. Sanskrit scholar. While Aryabhatta wrote in Sanskrit, he is renowned for science, not literature. Who invented decimal place value? Aryabhatta. Aryabhatta was the first Indian mathematician to represent a systematic notation for decimal place value system, a foundation of modern mathematics. His place value system was positional, and he used letters to denote numbers. Katpayadi system. Bhaskar, significant in algebra but not first to invent place value. Varah Mihir, known for astronomy. Brahmagupta gave rules of zero, came after Aryabhatta. Author of Mat Vilas Prahsan, Mahendravarman. Pallav king Mahendravarman I, 600 to 630 CE, authored this satirical Sanskrit drama. It criticizes corrupt monks and society, showing his literary talent beyond rulership. Matvilas Prahasan, Mahendravarman. Gautami Putra Satkarni, Satvahan king. Rudraman, Western Kshatrap ruler, known for Sanskrit inscription. Junagadh, Pulkeshi II, Chalukya ruler, contemporary of hers. Matvilas Prahasan, Mahendravarman ने लिखा. Satirical Sanskrit drama. It criticizes corrupt monks and society, showing his literary talent beyond rulership. Author of Lalit Vigraharaj drama, Somdev. Somdev ने ललित विग्रहरज ड्रामा नाटक सोमदेव and celebrated the Chahman ruler Vigrahraj IV. ललित विग्रहराज ड्रामा. हेमचंद्र जैन स्कॉलर थे. कल्हान हिस्टोरियन. राज तरंगिनी लिखे थे, महेश नहीं. ओके. एंशियंट नेम नीलोत्पाल फॉर महानदी स्टेटेड इन वायु पुराण. महानदी को नीलोत्पाल कहा जाता था. वायु पुराण इज वन ऑफ द 18 महापुराण्स एंड इट रेफर महानदी रिवर एज नीलोत्पाल. 18 महापुराणों में हाईलाइटिंग एंशियंट नेमिंग प्रैक्टिसेस. नीलोत्पाल वायु पुराण में महानदी को कहा गया. मत्स्य पुराण फोकस मोर ऑन कॉस्मोगोनी. मार्कंडेय पुराण डील्स विद धर्म एंड साइकिल ऑफ टाइम. ब्रह्म पुराण जियोग्राफी. मनुस्मृति is mainly related to social system. Is called Manav Dharmashastra. Is one of the oldest dharmashastras. Deal with one system, duties, laws, and ethics, forming the basis of Hindu law. Law true in a broader sense, but it focus on social structure.
The great lawgiver of ancient time was Manu. Manu is regarded as first lawgiver. Associated with Manu Smriti, the term Manu is symbolic denoting primeval man, the originator of human laws. Ashok, great emperor but not lawgiver. ठीक है. First lawgiver of India, Manu. Zero was discovered by an anonymous Indian. मतलब concept of zero शून्य is a number credited to India developed around 2nd century CE. Its earliest record was Baksali manuscript. Arab spread this idea to Europe around 9th century CE. Aryabhatta used zero symbolically but did not invent it. Brahmagupta gave mathematical rules of zero in 7th century CE. ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सुप्तादि सिद्धांत, ठीक है. भास्कर फर्स्ट फर्दर जीरोस यूज. जीरो वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस, ठीक है. द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? पेटोलमी ने लिखा. नेचुरल हिस्ट्री इज बाय प्लिनी द एल्डर, ए रोमन ऑथर. पेटोलमी ऑथर्ड जियोग्राफिका. प्लिनी द एल्डर. पोटोलमी ने जियोग्राफिका लिखा. एंड अल्माजेस्ट नॉट नेचुरल हिस्ट्री. नेचुरल हिस्ट्री लाइफ ऑफ हुएन सेंग हुईली ने लिखा. हिस्टोरिकल फिलोपिका पोम्पियस ट्रोगस ने लिखा. द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखा. और पेटोलमी ने जियोग्राफिका लिखा. प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा. Most ancient musical instrument among the veena. Veena is among the oldest Indian string instrument referred to Vedic and epic literature. That is Narad Veena, used in some with chanting. Sitar developed in the Mughal era. Sarod medieval origin. Tabla 13th century, credited to Amir Khusro. Aryabhatta versus Brahmagupta versus भास्कर. तो ये हम लोग का ख़त्म होता है. थैंक यू, बाय बाय.